आपने इक्विटी मार्केट्स के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस कमा लिया, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी बना लिया और हाल ही में आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला है एंड इनफैक्ट निफ्टी ने 4 नए इंडेक्स फंड्स भी लॉन्च कर दिए. बट आर दीज फॉर यू? लेट्स फाइंड आउट. डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड वेयर आई विल बी टेलिंग यू which 4 new indices have been launched by Nifty. Why are these indexes being launched continuously? Thirdly, and more critically, are these indexes for you or not? So, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडेक्स होते क्या है. So, indices are a group of listed companies which allow you to enter into the stock market in a specific index. For example, अगर आप S&P BSE Sensex इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको Sensex में होल्ड करी गई 30 कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा in the same ratio that are held in the index. So, indices के अंदर हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती. By investing in a single index, you are able to get the choice to invest in a large number of companies. And these are usually the top companies which are part of that index. अब समझते हैं कि निफ्टी ने कौन से नए 4 इंडिसेस लॉन्च किए हैं. पहला इंडेक्स है निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप. इस इंडेक्स के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर गोइंग टू बी TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन एंड सम मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द टाटा ग्रुप कंपनी. The second index which has been launched is Nifty 500 Multi-Cap Infrastructure 50:30:20. These are going to be infrastructure companies. 50% are going to be large cap, 30% are going to be mid cap, and 20% are going to be small cap. Some of the examples of these companies are Reliance Industries Limited, Larsen & Toubro, and Adani Ports. The third index fund being launched is Nifty 500 India Manufacturing 50:30:20. That is, you will be getting exposure to some of the great manufacturing companies in India in the ratio of 50%, 30%, and 20% in large, mid, and small cap, respectively. Some of the examples over here are Sun Pharmaceuticals Limited, Reliance Industries Limited, and Tata Motors Limited. The fourth and the final fund is Nifty Mid and Small Healthcare Index. Here you will be getting the exposure to some of top India's mid and small cap companies, specifically from the healthcare sector. You will be investing in 30 of India's healthcare companies, and some of these examples are Lupin Limited as well as Aurobindo Pharma. आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं? आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी डीमैट अकाउंट के थ्रू एंड ये इन्वेस्टमेंट्स आप इक्विटी मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं एंड साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी कर सकते हैं. Let's answer the more critical questions and the elephant in the room. Are these indexes actually for you or not? सबसे पहले तो किसी भी सेक्टर के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर, इंडेक्स के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए. Always understand one, the companies that you would be investing into their financials. Secondly, the valuation of the sector, and thirdly, the momentum of the sector. Only once you're convinced by all of these parameters should you decide to invest in a particular sector or even an index. We as financial advisors recommend that instead of choosing an index, one should opt for an actively managed fund. But क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि indices आपको कॉस्ट तो डेफिनेटली सेव कर देगी. किसी भी मार्केट इंटरमीडिएट की कॉस्ट तो डेफिनेटली आपको सेव कर देगी. बट द प्रॉब्लम विद एन इंडेक्स इज दैट देयर इज नो एक्टिव एडवाइजरी इन्वॉल्व. आपको मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ. 2019 के अंदर जब येस बैंक के अंदर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, अगर आपने एक बैंकिंग इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता जिसका येस बैंक पार्ट है, तो यू वुड हैव कंटिन्यूड टू होल्ड येस बैंक टिल द टाइम द प्राइस हैड सिग्निफिकेंटली करेक्टेड एंड योर प्रॉफिट्स वुड हैव बीन इरोडेड. हाउएवर, अ फंड मैनेजर हु इज एन एक्सपर्ट इन ओवरसीइंग सिक्योरिटीज वुड हैव आइडेंटिफाइड दिस मैनेजमेंट प्रॉब्लम एट एन अर्ली stage and would have exited Yes Bank from an actively managed mutual fund at the right time, saving your profits. This is the advantage of actively managed mutual funds over index funds or indices. सेकेंडली, जब आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर आते हैं तो आपका एम होता है एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करना. मगर अगर आप किसी इंडेक्स फंड में या फिर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं देन यू वुड बी लिमिटेड टू द रिटर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. इंस्टेड, अ बेटर स्ट्रैटेजी इज टू गो फॉर a SEBI registered investment advisor and ask them to customize a stock portfolio for you basis your financial goal and your risk appetite. This will enable you to get the advantage of the stock exposure that you are looking at, and at the same time your SEBI registered investment advisor will continue to advise you on which are the right stocks to buy at a particular point of time. और जब इन stock prices में काफी हाइक आ गई होती है तो फिर वो आपके stocks को सेल करके आपके लिए profits preserve भी करते हैं.
Why are these indices being launched in India so frequently? So Nifty एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर ऑलरेडी 350 इंडिसेस प्रेजेंट है और उन्होंने अब ये अपने 4 नए इंडेक्स लॉन्च कर दिए. बट ये आखिर इतने सारे इंडिसेस लॉन्च हो क्यों रहे हैं? निफ्टी as well as S&P BSC are two prominent entities in India which allow investors to invest in the stock market through various mechanisms. So जाहिर सी बात है इन दोनों कंपनीज के बीच में मार्केट कंपटीशन तो रहता है, सो दोनों अपने इंडिसेस लॉन्च करते रहते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट. सेकेंडली, इंडिया का हाउस होल्ड इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 4.4% है एज कंपेयर टू 22% इन यूएस. Only 4.7% of Indian households are investing in the equity markets. So all of these companies are launching new indices as well as new avenues to attract more investors and make India a more mature market in terms of our stock markets. So the more the merrier. And thirdly, India का manufacturing space के अंदर interest देखते हुए a lot of companies are now creating investment methodologies around the manufacturing theme. Some of the examples are manufacturing mutual funds or manufacturing indices, as we have seen in the case of Nifty. So this was our video on the 4 new indices launched by Nifty. I hope and I do believe that this added value to your financial planning content. Please do let us know on what other relevant content you want us to talk about. Till then, this is Shalini Gera signing off. You take care of yourself. Bye-bye.